Everyone, and a big welcome to today's session. So, really looking forward to learning new interesting things in this session. So, do we remember what we did in the previous sessions? हमने पहले सेशन में किया था letters and words. फिर हमने कल के सेशन में किया था phrases and clauses, and then the punctuations related with sentences. अब पंक्चुएशन मार्क्स तो पंक्चुएशन बहुत सारे और भी हैं जो कि आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो आज आपके साथ टॉपिक करने वाली हूँ दैट इज अबाउट कैपिटलाइजेशन। कैपिटल लेटर्स इन रिसर्च राइटिंग। तो कैन एनीबडी टेल मी, टाइटल जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें कैपिटल लेटर्स के लिए बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। इंडेक्स आता है आपका, बहुत सारी जगह आपको कैपिटल लिस्ट बनती है आपकी, फिर आपकी सब हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं। तो सब जगह कैपिटल लेटर्स कहाँ, कौन सा कैपिटल होगा, कौन सा कैपिटल नहीं होगा, दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। So can anybody share some insights कि capital letters and thesis के क्या correlation है, या index में या title में हमको क्या क्या follow करना चाहिए, क्या क्या नहीं follow करना चाहिए? Before I start my session, please can you share some insights? Anybody? कुछ rules होते हैं, कुछ Ma'am, yeah. the rule states to capitalize the first word in any sentence, then to capitalize the proper nouns, like which are the names of specific nouns, basically. Mm-hmm. Okay, That's it. yes, that's absolutely correct. In a sentence case, जैसे आपके computer gives you that option कि आप सारे upper case में कर लीजिए, सारे lower case में कर लीजिए, और you can change your script to sentence case. तो sentence case में अगर आप लिख रहे हैं, तो what ma'am has shared, absolutely correct. You begin the first letter of the sentence with a capital letter. And if you have proper nouns in the sentence, then you capitalize those also. But इसके अलावा हमारे thesis में जब, या otherwise also when you're writing any paper, बुक लिख रहे हैं आप, या बुक पढ़ रहे हैं, या आप कोई पब्लिकेशन पेपर भेज रहे हैं, तो वहां पे हमको हेडिंग के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए? सो आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर्स, बट आई कैन सी ओनली 42 पार्टिसिपेंट्स हैव ज्वाइंड, और अगर हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर देंगे तो फिर दे आर गोइंग टू बी मिसिंग आउट ऑन दिस इंफॉर्मेशन. What do you say, Preeti ma'am? Because And we will continue. Actually, I have told them to join at 2 p.m. sharp because of lack of okay, time. Otherwise, we will not get much time for MCQs and other things. yes, absolutely. So let me start. So I'm okay. So this is day 3. Sorry, I'll just have to close this and go to day 3. So this is day 3 and we are starting with capitalization. So like what ma'am just shared, to begin a sentence, there was heavy traffic on the road. The first letter is a capital letter. For proper nouns, so agar aap specific names of places, now this is very very important. Specific names और general names में difference होता है. जैसे अगर हम जनरली बात करें cities, there are many cities in India, there are many mountain peaks, but we are talking about one specific mountain peak, the highest mountain peak, then Mount Everest becomes in capital letters. There are many historical monuments. तो जो हम जनरल चीजों की बातें करते हैं, they are the common nouns. And when those common nouns are given a specific name, that becomes a proper noun for that general whatever building or monument or whatever. So this specific name
that is, a proper noun has to be written in capital letters. और abbreviations अगर आप लिख रहे हैं तो always in capital letters, जैसे IT, information technology, अगर आप small में लिख देंगे तो it will become it. So we cannot do that. And CEO, Chief Executive Officer. So please remember, these are the common rules. Now, when we talk about, there are some more rules, like when you're writing about the days of the week, month, festival, always in capital. अगर आप किसी का टाइटल लिख रहे हैं, डॉक्टर so and so that doctor always capital. Pronoun I will always be capital in a sentence. कभी भी I को small letters में नहीं लिखा जाता. And the next rule is, when you are quoting somebody, quotation marks में अगर आपका sentence शुरू हो रहा है, तो first letter should always be a capital. So these are the rules that we have to always remember. Now, title में क्या क्या हमें याद रखना चाहिए? तो when you're writing the title or the heading और the index, कहीं पे भी ये रूल्स आपके सब जगह एप्लीकेबल होंगे. तो फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल, लास्ट वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल, and the important words in the title. So what are the important words? All the adjectives, all the adverbs, all the nouns, all the pronouns, all the subordinating conjunctions which are more than 3 letters, and verbs. तो ये हमें हमेशा याद रखना है. कैपिटलाइजेशन, जब आप टाइटल कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर अब इसमें क्या क्या नहीं कैपिटलाइज होगा ये भी हमें जानना चाहिए. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज नॉट कैपिटलाइज्ड? Like we have just learned what should be capitalized. Can anybody tell me what should not be capitalized in a title? जैसे important words. So first word is always a capital, last word is always capital, बीच के सारे जो important words हैं वो capital. So which words are not capitalized? There are certain rules for that. So now I'm going to tell you, articles are not capitalized, absolutely. And what else? Prepositions. Prepositions, which prepositions? Those which are joining two clauses or two separate, for example, separate thoughts or concepts. If Ma'am, they are joined, but, for, and, nor, these are not to be capitalized, ma'am. okay. So I will say, like, articles are not capitalized, but अगर आपका thesis का beginning a और and से हो रहा है, जैसे a study in the field of something, तो वो a capital होगा क्योंकि first letter is always capitalized. The information, so अगर आपका first letter ही article है, please capitalize that article. Otherwise, in the middle of the title, if the articles are there, then they are not capitalized. All the coordinating conjunctions are not capitalized. Fanboys, because they are very, very short. So usually the rule is कि 3 letters और उनसे कम वाले words are not capitalized. But verbs is, am, are, उनको आप capitalize करते हैं. Is को, is 2 letter, am is 2 letter, are is 2 letter, 3 letter, तो इनको आप capitalize करेंगे. पर बाकी जो conjunctions की अगर हम बात करें, तो small coordinating conjunctions are not capitalized. And prepositions में भी जो 2 words वाले prepositions हैं, they are not capitalized. But अगर आपका बीच में between आ रहा है, among आ रहा है,
outside आ रहा है, within आ रहा है, तो these prepositions can be capitalized. So not capitalized में simple है articles a and the, coordinating conjunctions and but or for yet so nor, and the prepositions which are these two letter prepositions. So these are not capitalized. So now I'm going to do an activity and exercise with everyone. So is this clear? Very, very simple. No complications, clear cut. So this is the sentence case. Like I was talking about, there is a difference between a sentence case and a title case. Sentence case में खाली first letter capital होता है. So a portrait of the artist as a young man. This is a sentence case because only the first letter is a capital letter. पर आपको ये टाइटल है बुक का एक्चुअली, तो बुक का टाइटल है तो फिर तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती, तो आई हैव टू चेंज. तो व्हाट विल आई राइट? अ पोर्ट्रेट का पी विल बी कैपिटल, ऑफ क्योंकि टू लेटर है नहीं होगा, दी नहीं होगा, आर्टिस्ट कैपिटल होगा, एज अगेन टू लेटर है नहीं होगा, अ नहीं होगा, and young man capitalized. So this is what I have to keep in mind, because I have seen many corrections are required in heading also, because I have been editing a lot of books. तो बुक्स के भी जो टाइटल पेज होता है, जो इंडेक्स होता है या रिसर्च पेपर्स होते हैं, तो उनमें सब में मुझे यहाँ पे जो टाइटल वाला जो पेज होता है, इंडेक्स वाला पेज होता है, बहुत करेक्शंस होते हैं. सो प्लीज कीप, I mean, this will definitely help you in writing your headings correctly. So sentence case, second example is Zen and the art of motorcycle maintenance, colon, an inquiry into values. अब यहाँ पे आप अगेन इसको आप जब चेंज करेंगे टाइटल केस में, तो Zen and नहीं होगा, the नहीं होगा, art of motorcycle maintenance and inquiry into values. This is a continuation of the previous part, but ये कोलन के बाद एक अलग शुरू हो रहा है, तो इसको हम कैपिटल में करेंगे. अगर ये खाली लिस्ट होती तो हम इसको कैपिटल में शायद नहीं भी करते. ओके, बट बिकॉज दिस इज अ टाइटल केस एंड को हमने यहाँ पे टाइटल में कर दिया, कैपिटल में कर दिया. ओके, so this is what we have to keep in mind. Now there's an exercise on capital letters. So you have to, there are 3 sets of sentences given. और आपको क्या करना है, उन सेंटेंसेस में से जो करेक्ट सेंटेंस है वो ऑप्शन आपने मुझे बताना है. A, B, C, there are 3 groups. So the first group का what's the correct option, the second group में what's the correct option, and the third group what's the correct option. So I'm just going to be sharing this with everyone, and please let me know what is the correct option in the first group out of these 3 sentences. This is sentence case. Ma'am, B1 is the correct in first case. A is the right for the first one. Who said A is the right one. A is the A right is the right one? Because you क्यों capital होना चाहिए? There's no need ना. Why should you be capital? So in the B1 U is capital, and in the C1 I is not capital. So that is why the first one is correct. In And the second one, it's C. First, C. Second is C. Yes, C. ma'am. C. second C. is C. Absolutely, because first one में husband का H capital की जरूरत नहीं है, second one में chemist का C की जरूरत नहीं है, and third one is correctly capitalized. Then this is a title, One Perfect Rose. C. C is the correct one. If it's a title, then all the letters need to be capitalized. क्योंकि जो जो नहीं होने हैं, we have just seen. So now we come to the inverted commas.
Now inverted comma, so capitalization is very, very simple, very clean, clear-cut rules. There should not be any confusion of any kind. आज के जितने भी आपके topics हैं वो बहुत simple, clear-cut हैं. This, and like yesterday we did clauses and there were so many points that we had to take note of. पर ये आज के जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द रूल्स वी जस्ट नीड अ क्विक रिविजन सो कैपिटलाइजेशन का हमें ये याद रखना है कि articles are not capitalized, coordinating conjunctions are not capitalized, prepositions, two-letter prepositions are not capitalized, but if they are in the beginning of the title, then they will be capitalized. So that is what Hello, it madam. is. Now, Hello. hello, madam. yes. Madam, can you explain the third example? That is the rows regarding rows question tha perfect rows. हाँ. So there are the two, 1, 2, 3 letters are capitals. So please give the explanation for that. हाँ मैंने बोला one perfect rose तो आपने सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्या वर्कशॉप हाँ yes हाँ थोड़ा लेट हुआ. So because in the beginning I had explained that the first word of the title and the last word of the title is always capitalized. And there's a difference between sentence case and title case. So in a title, like first word, last word, and the important words are capitalized. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन सा कैपिटलाइज नहीं होता है जिसमें अ एंड द आया और बाकी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आए और प्रपोजिशंस आए. सो आई विल जस्ट क्विकली रन दिस थोड़ा सा बता देती हूँ मैं because and then we will this is day 3 I'll just quickly do this. So this is to begin a sentence for proper nouns for abbreviations, then for the name of a day, month, festival, write a title before someone's name, for pronoun I, and for the first letter in a quotation. And for the title, capitalize the first word, capitalize the last word, capitalize the important words. Important words में adjectives, adverbs, nouns, pronouns, subordinating conjunctions and verbs. What is not capitalized? Articles and coordinating conjunctions and prepositions which are two letter. तो इसलिए हमने जब ये हमने फिर एग्जाम्पल किया फिर हमने ये सेकंड एग्जाम्पल किया फिर हमने ये एक्सरसाइज की. सो वन परफेक्ट रोज all cannot be lowercase. One perfect rose, the second one will become the sentence case. It is not a title case. Or one perfect rose, the title case will be the C option, correct? Does this answer your question, sir? Yes madam. Okay. Thank you, madam. Okay. So now we are coming to inverted commas. Inverted commas में confusion क्या होता है? Inverted commas. So ये actually इधर से देखिए तो ये commas ही है और इधर से देखिए तो ये बेचारों को invert कर दिया है. So they become the speech marks, the quotation marks. So also known as inverted commas. They can be double inverted commas or single inverted commas. So we will understand where to use these. We know that these are the quotation marks, so इसलिए हम इनको quotation में use करते हैं. तो किसी की speech आपको बतानी है. तो जैसे अगर George don't do that and it is within quotation marks, that means somebody said this. We don't know who did this, who said this, but these are the spoken words. So in quotation marks tell us that अगर आप किसी और की speech को बता रहे हैं, my grandpa said, share your chocolates with your friends. So again, inverted commas. Inverted commas are also known as quotation marks and speech marks. तो ये तो simple वाला था. अब इसके अलावा कभी-कभी आप अपने रीडिंग में भी पढ़ते होंगे कि कोई सर्टन वर्ड और फ्रेज को इन्वर्टेड कॉमास में क्यों कर दिया गया है या कहीं-कहीं सेंटेंस में क्यों कर दिया गया है. तो इनके 3 एग्जाम्पल्स हैं. अगर आप
किसी को ये बताना चाहते हैं कि somebody else said this, तो आप उसको कोटेशन मार्क्स में लगा सकते हैं। अगर किसी को सिग्निफिकेंट वर्ड और फ्रेज सेंटेंस में बताना है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर सकते हैं, और अगर इडियम्स और अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस है तो भी इन्वर्टेड कॉमास में आ सकता है। तो जैसे वी कॉल दिस फिनोमिनन द वाटर साइकिल। अब इसके दो फंक्शंस हो जाते हैं यहाँ पे। एक तो आपने कहा कि द वाटर साइकिल इज द नेम ऑफ दिस फिनोमिनन, and also you are paying stress on this. So one of Michael Jackson's hit songs is called Billie Jean, the name of the song. Tom talked ad nauseum. अब ad nauseum हमने foreign words में किया था, हमें किसी को नहीं पता है तो हम उसको inverted commas में कर सकते हैं कि this is a foreign phrase. So when using idioms or unfamiliar expression in a sentence, आप inverted commas use कर सकते हैं। इनके लिए आप इटैलिक्स भी यूज कर सकते हैं, इनके लिए आप अंडरलाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, तो दे कैन बी इंटरचेंजेबल। सो सिंगल स्टाइल इन्वर्टेड कॉमास कहाँ आते हैं? ये अगर आपने कोटेशन के बीच में आपको कुछ स्ट्रेस करना है तो वहां पे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लाओगे। जैसे ही सेड दैट विल बी अ मार्वलस, उसमें है तो इसका सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में इसका मतलब क्या हो गया? इस पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, एक्स्ट्रा एम्फेसिस है, तो दैट विल बी मार्वलस, वी विल सी यू एट द प्लेग्राउंड। तो जहां पे ये आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स दिखेंगे, दैट मीन्स दैट वर्ड नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन। So this is the function of single inverted commas. अब हम इस पे भी एक्सरसाइज करने वाले हैं। So quotations, जब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो अभी हमने कैपिटलाइजेशन किया, तो कैपिटलाइजेशन में हमने देखा कि द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन सिंगल इन इन्वर्टेड कॉमास, है ना? तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन एज इट इज, ये हमने ऑलरेडी किया है। पर अगर आप कोई फ्रेज बोल रहे हैं, अगर आप इनकम्प्लीट फ्रेज, क्या होता है? वी ऑलरेडी नो दैट फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ओनली कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं जब तब आप फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करते हैं कोटेशन में। अगर ये फ्रेज आता है तो फ्रेज को आपको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। सो ही कॉल्ड देम लाउड, स्मेली एंड utterly annoying and he closed the door. तो ये देखिए यहाँ पर इनको हमने कैपिटलाइज नहीं किया बिकॉज दिस आर फ्रेज, दिस इज अ फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज नॉट अ सेंटेंस। तो और थर्ड होता है जब आप एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो जैसे Paula explained, the problem with opinion is that everyone has one. तो ये आपका एक प्रॉपर सेंटेंस है, पर हमने क्या किया? इसको बीच में से स्प्लिट कर दिया इनटू टू पार्ट्स। तो द प्रॉब्लम विद ओपिनियंस, और फिर क्योंकि इस पहले का ही हिस्सा है, मुझे हिज इज को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। So these are the three conditions we have to keep in mind. Quotation and capitalization में हमें ये सिखाया जाता है कि first letter should be always capital, always capital. But there are certain conditions in which the first letter is not capital. So what are those conditions? The first is if you are quoting a phrase, not a sentence. तो phrase को आप capitalize करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड है, अगर आपने एक ही सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया तो सेकंड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस नीड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। ओके, इज दैट क्लियर? सो वी विल बी डूइंग एन एक्सरसाइज नाउ। कैन यू, आर यू रेडी फॉर दिस एक्सरसाइज?
अब हम quotation marks पे एक exercise करेंगे. I'll show you some sentences. You can tell me where exactly the quotation marks need to be used. और फिर हम उन्हीं के answers देखेंगे. All right? Are we ready for this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes? Okay. So this is, yes. Maya is trying hard in school. This semester This has to be semester will within, be inverted quotation marks. commas. Yeah. Yeah, inverted commas open Maya पे and close Semester. semester पे. जो comma है वो within the inverted commas होगा. ठीक है? जैसे हमने कॉमा का किया था इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में, जब हम कॉमा कर रहे थे कि यस और नो भी के बाद कॉमा आता है. सो सेकंड वाले में कैसे होगा? Ma'am, beginning No with would be I. in the inverted commas, and then again, I cannot get you to the airport in Yes. 15 minutes 15 once minutes more. will be in inverted commas. हाँ, And Because absolutely. it's yeah. Yes. She asked, do you read Do you newspaper read newspaper regularly? regularly? That will be in Yes. the inverted commas. Inverted commas. So these are the answers. Maya is trying hard in school this semester within inverted commas, no inverted commas, and then again, this I cannot, and do you read? So please see the punctuation mark, उसी के अंदर close हो गया है. अगर ये होता, did she ask, do you read newspaper regularly? तो फिर quotation ये it, because it's ending as a question, that question mark would have come at the end anyway. Quotation marks. Now you have to tell me the correct option. Ma'am, first one का है, second is the correct one. First one ka first one is correct. Oh, sorry. First one is correct, ma'am. First one is correct. First one. Okay, okay. After The comma. second one में Ma'am, second one. second one is correct. और third में Ma'am, first one. First one. First one. absolutely correct. First one. Absolutely correct. So in this, Ma'am, second one. First. yes. First ka second one. First का second one. And second का Second ka first one. yes. First one, ma'am. Absolutely. So First be very careful. Yes. Now we come to ellipsis. Can anybody tell me what's ellipsis? इतना commonly used punctuation mark है ये. Everywhere we are using it. We've been using it for since school years. So anybody, if you can share कि ये ellipsis क्या है और कहाँ use होते हैं? जब उसमें भी हाँ To show continuity. हाँ absolutely. कभी कभी तो I'll just explain to you what are ellipses और ये कहाँ use होते हैं. We, So ma'am, ellipsis, we omit a word or sentence like from a particular section. yes. So ellipsis, 3 dots. Deliberately we do that, ma'am. Huh? Ma'am, we deliberately like omit a particular word or a sentence from a given Yes. text so that its Absolutely. original meaning doesn't change, ma'am. Yes. So when we are omitting the words, then we usually replace those words with these dots, 3 dots. So the first function is replacement for omitted words.
तो जैसे यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है, what good fortune, that the people do not think. So what good fortune for whom? For the government, but it's omitted, it's not said. Then sometimes it is the words are omitted for effect. Then it appeared, pause, a genie. So again, that's three dots means pause. Sometimes an unfinished thought. I know he deserved it, but we don't know what happened. So these are, and sometimes a trail off into silence. We were now on our own. So I found this very interesting. So I thought I would share this with everyone. And now we are going to be doing an exercise on this. First, we will just understand. So it's a punctuation mark consisting of 3 dots. And we use it when we are omitting a word, phrase, line, paragraph of more from a quoted passage. And then we use it because it saves space or removes material that's less relevant, avoids repetition, and sometimes it also is used informally to show hesitation or an incomplete sentence. So many times in WhatsApp messages also we see that a message has come to us, or we are sending a message and we want to express so much, but we maybe are not getting the correct word. So we just say dot, dot, dot. That means a lot more is left to be said. It is not yet complete. So वहाँ पे हमारे ellipsis आते हैं rescue के लिए. So this is the exercise. Harish did his homework even though he, what would be the option here? Didn't want to. He didn't want to. To. Yes. Didn't want After to. that, yes. So after that, you can, I mean, you don't have to write complete thing. You can just omit. She said she could use a computer, but it was obvious that she Couldn't. She couldn't. couldn't. We can't repair your car today, but tomorrow We can. we can. You don't work as hard as you. Should. Yes. I don't know if I'll pass all my exams, but I Hope. 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 But I hope to. I hope to. hope to, but I hope to. Okay, now this. I didn't. University. I didn't. I didn't. I didn't. Although I could have gone to university, I didn't. Yes. The next one. Mean to. Mean to. He didn't mean to. Absolutely. She should get the job, but she She didn't. didn't or won't. She should get the job, but she yes, ma'am, won't. हाँ अच्छा Won't. didn't क्यों नहीं होगा? Just let me ask ऐसे ही क्या logic क्या है? Because should and won't are like should, didn't. मैम didn't अगर आएगा तो could आना चाहिए पहले should की जगह. She could, she didn't. मैम अगर didn't आता तो वहाँ पे could होता, but यहाँ पे Didn't should है रहता तो तो it she will should be have got the job, like, but हाँ. she didn't. Yes, ma'am. Absolutely. She should have got the job जो है वो past tense हो गया. Should का भी past tense होता है, could का भी past tense होता है. तो should का past tense is should have. So she should have got the job. Means it is in the past tense, but she didn't. But she should get the job is in the present tense, so she won't. अब जैसे हमने पहले ऊपर ये सेंटेंस किया, although I could have gone to university, that means could have आ गया, मतलब past tense हो गया. So I didn't. और अगर हम बोलते हैं I could go to university but I haven't.
तो could अगर आ गया तो वो present tense में चल रहा है, क्योंकि can का past tense है could, तो वो भी एक कभी कभी वहां पे confusion आता है, but could have is always past tense and should have is the past tense of should. So this is what, that is the logic why we are using the past tense here and present tense here. Smita keeps her study room tidy, but Roshan, Doesn't. yes, because again it's in the present tense, so present tense. Varun didn't do well in the exam. He was sure he Would. would. Will ka past tense aa gaya. He would definitely. So now we come to parenthesis. Now parenthesis क्या है और कहाँ पे use होता है? Anybody? Where is parenthesis? Parenthesis का मतलब क्या है? ये तो हम सबको पता है ना. सबसे commonly used punctuation mark है parenthesis. But why do we use it? Clauses, maybe. Okay, okay. Parenthesis means It's like brackets. adding something extra to the word, like when you want to say something more. Yeah. Yes, yes, yes. So जो भी हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम कॉमास के टाइम भी कर रहे थे कि जो कॉमास हमेशा सेपरेट करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को, सो पैरेंथेसिस आल्सो डू द सेम थिंग. So let's see what is the function of the parenthesis. So that is the most common punctuation mark, brackets. Sam, the boy from school, helped me with my homework. अब इस information को मैं comma में भी कर सकती हूँ और in brackets भी कर सकती हूँ, because even if I remove this information, the sentence won't change. Sam helped me with my homework. The children won their basketball game. Full stop. Now, sometimes this information can be a complete sentence. So if it is a complete sentence, then it will start with a capital letter. And the third example is, she is a great friend, but I want to write her name. So that will be extra information in bracket. So let's see here. If you remove the information that is inside the parenthesis, the sentence must still make sense. तो ये important है कि वो extra information कहीं आप ऐसी essential information को bracket में कर दिया जिसको हटाने से sentence का ही meaning change हो गया, तो आपका bracket का usage ही गलत हो जाएगा. वो bracket ऐसे होने चाहिए कि नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन को आप ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया आपने, एसेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं. सो जेनी invited you to her birthday party next week. Extra information is the girl that lives in the yellow house. So even if I remove it out of the sentence, my sentence still remains intact. I'm going to Mumbai next week with Rashmi, who is my friend. So who is my friend is the extra information. Yes. So parenthesis में खाली हमें ये याद रखना है कि non-essential information only should go in the brackets. और वो हम उससे कॉमा से भी कर सकते हैं. अब यही parenthesis को अगर हमें replace करना है, तो हम इसको और एक punctuation mark से replace कर सकते हैं. एक तो हमने कॉमा कहा. Do you know there's another punctuation mark which you can replace this parenthesis with? Anybody? Semicolon. Semicolon extra information के लिए नहीं आएगा. Extra information के लिए तो we use only commas. So what is the use of dash? When do we use dash? So dash हम use करते हैं again for this parenthetical statements. So a dash separates words into parenthetical statements. So अगर मैंने ये हमें बहुत clear होना चाहिए कि where we are using the dash, तो वो ही information है जो extra है. उसको या तो मैं brackets में लिख लूं
या फिर मैं डैश से सेपरेट कर दूं, या फिर मैं उसको कॉमास से सेपरेट कर दूं. So after a split second of hesitation, the second baseman leaped for the ball, or rather limped for it. तो ये मेरी extra information है. अब इसको मैं dash से replace कर सकती हूँ. So there is a difference between hyphen and dash. Hyphen separates words, compound words. कंपाउंड वर्ड्स थे, नंबर्स थे, और कभी कभी एडजेक्टिवल कंपाउंड्स होते हैं जहां पे वर्ड और नंबर आ जाते हैं. डैश हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन. डैश इज सेपरेटिंग वर्ड्स which can be converted into parenthesis, your parenthetical statements. तो ये हमारा डैश का काम है. Hyphens and dashes, we should know the difference between these two. So, just a moment. Can you see the slide? Can you see the slide? Yes, ma'am. So, words separates words into parenthetical statements after a split second of hesitation. So, this information जो parenthesis की है वो हम dash में कर सकते हैं. That is what we have to remember. और dashes कभी कभी कोलन भी आ जाता है. अगर हमने लिस्ट बनानी है तो हमारे पास कोलन भी हमारे प्लेटर में बैठा हुआ है, बट हम अगर कोलन को रिप्लेस करें तो डैश उसको रिप्लेस कर सकता है. बट डेफिनेटली डैश इज मोर एम्फेटिक देन कोलन्स, बट लेस फॉर्मल. तो ज्यादा ये इनफॉर्मल होने के कारण इट इज नॉट यूज्ड दैट मच. कोलन इज यूज्ड फॉर थिंग्स, फॉर लिस्ट्स. इसके अलावा डैश के क्या क्या और फंक्शंस हैं? तो स्पैन ऑफ टाइम और अ रेंज ऑफ नंबर्स. सो स्पैन ऑफ टाइम, रेंज ऑफ नंबर्स, ये हमारे पेज 1 टू दिस पेज, हमेशा ये बीच में जो हमारा पंक्चुएशन आ रहा है दैट्स अ डैश. देन टाइम के लिए, टाइम स्पैन के लिए हमेशा हम डैश यूज करते हैं. ईयर के लिए डैश यूज करते हैं. So all these, if somebody, मतलब कई बार हमें पता ही नहीं होता कि what is this we are using, so we are using the dash there. Now we come to italics. Italics, मैंने ये italics में लिखा ही इसलिए है because italics are used to get the word or phrase noticed. और वो क्या क्या हो सकता है? Emphasizing a certain word, foreign words, technical words, unfamiliar words. तो आप या तो उन्हें इटैलिक्स में करिए या फिर आप उनको अंडरलाइनिंग करिए, पर या फिर आप उनको बोल्ड में भी करते हैं, और या फिर उनको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में या डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर टू ड्रॉ अटेंशन, बट यू कैन नॉट यूज two of these at the same time. आपने italics में भी कर दिया, underlining भी कर दिया, that is not done. या तो आप italics कीजिए या आप underlining कीजिए. So that is important. Now we come to numerals in writing. This is interesting. So are we clear on what we have done? We are doing very, very simple basics today. So after clauses, after apostrophe, after all the phrases and commas and semicolon, this must be like a cakewalk for everyone, I'm very, very sure. Yes, ma'am. Yes, this must be super duper easy. So that is why I kept the complex wala topics yesterday, so that today we can really just revise. So we have done, what did we do right in the beginning? Can anybody quickly give me a recap? What did we start the session with? Inverted commas, capitalization, inverted commas. Yes. Then what are the other two names for inverted commas?
quotation marks and Speech marks. Speech marks. my voice is echoing. Hello. Yes. Okay. So we did capitalization, then we did inverted commas, then we also understood what all not to capitalize in inverted commas, because usually every sentence we know that begins in quotation marks is capitalize the first letter of the sentence. But sometimes if you are using a phrase, then that phrase need not be capitalized. If we are splitting a sentence into two parts, so if it is the continuation of the same sentence, the second part need not be capitalized. Then we did parenthesis. Parenthesis is again very commonly used. It is bracket, and the information in the parenthesis is the extra information. Extra information is also known as the non-essential information. So essential information cannot be put into brackets. Non-essential information can be put into brackets. It can also be put in separated by two commas, and dash also does the same function. Dash also has other functions. It shows the span of time, the range of numbers and years. So all that was in the dash section. Now we come to numerals. Now before I do numerals, I just would like to ask everyone, anybody can answer, what could be the rules for numerals in writing? न्यूमरल्स से राइटिंग में हमें बहुत बार न्यूमरल्स यूज करने पड़ते हैं, और फिगर्स आपके स्टैटिस्टिक्स में जो न्यूमरल्स का जो सेक्शन है वो तो मैंने कवर ही नहीं किया है, बिकॉज दैट यू मस्ट बी लर्निंग इन स्टैटिस्टिक्स. बट अदरवाइज ऑल्सो आपको कैसे नंबर से कहाँ न्यूमरल्स यूज करने चाहिए? कैन एनीबडी टेल मी दैट? Roman. Which numbers should be in words, which numbers should be in numerals? यही confusion होता होगा. So anybody? Yes. Single digit Ma'am, number. like denoting date or time, Numbers from 10 onwards. we have to use numbers. Number from 10 onwards. 10. Numbers. Otherwise, they can be spelled out. Ma'am, from 0 to 9, like we have to write it in words. Okay. And from 10, we can use it in numbers. Yes. Like APA style. Yes, absolutely. Yes. What else? That's it, ma'am. Okay. Anybody else? Ma'am, years can Year? should be written in numbers, not in numerals. Okay. Year should be written in numbers. Not in numerals. Okay. Let's look at all the rules. And so before I do numerals, is there any confusion about what we did in clauses and phrases and apostrophe that we did yesterday? Do you want to ask any question related to that? If you have any questions, then you just please keep them ready, because if we have time, then we can answer those queries, right? So please feel free to ask your questions related to syllables, word division, then foreign words, sounds, anything, whatever we have done till now. So if you have any questions, please keep those questions ready. So numerals. So like you rightly said, small numbers ranging from 1 to 9 should be spelled out. For example, these 3 samples were considered for further testing. यहाँ पे आपने 3 को
numbers में नहीं लिख, numerals में नहीं लिखना है, you have to spell them out because 1 to 9 should be spelled out. पर exception है. अब न्यूमरल्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि एक रूल है और उसके बाद उसी रूल का एक एक्सेप्शन है. तो न्यूमरल्स हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज देम विथ sometimes with a precise unit, or we may be using them in general. But if there is a specific unit of measurement given, तो फिर आप नंबर न्यूमरल यूज कर सकते हैं, करना चाहिए. So example is the samples measured 7 centimeter in diameter. So 7 centimeter is a precise unit of measurement. तो वहां पे आप 7 यूज कर सकते हैं. पर अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें, 3 सैंपल्स, तो सैंपल्स तो कोई प्रिसाइज यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है. इट इज अ वेरी जनरल टर्म. सो वहां पे हम वर्ड्स यूज करेंगे. तो वहां पे स्पेल्ड आउट. पर आप कितनी बार रीडिंग में पढ़ेंगे कि अरे मैम ने तो बोला था कि 0 1 to 9 के स्पेल आउट होने चाहिए, बट यहाँ पे तो ये हमें नंबर दिखा रहा है. तो व्हाट इज द डिस्क्रिपेंसी? So the discrepancy is कि अगर specific unit of measurement is already given, तो आप वहां पे numeral use कीजिए. So 7 centimeters होगा, 5 metric tons होगा, तो 5 अगर है तो वो numeral आएगा. और otherwise आप general अगर consider कर रहे हैं तो words में कीजिए. Is this difference clear? Yes, Hello. ma'am. Yes. Yes, Is ma'am. this difference clear? Okay, so we go Yes. to the next rule. This is the first rule. 0 to 1 to 9 should be spelled out, but then again, the exception is there. If the number is rounded or estimated, spell it out. अगर हमें 400 million people approximately कहना है, तो हम उसको spell out करेंगे, ना कि इतने सारे zeros लिखेंगे. And the second rule is be consistent within the same sentence. क्योंकि 7 and 13 years old, अगर माना, वैसे भी 7 and 13 years old में क्या गड़बड़ हो रहा है? 7 से तो हमें शुरू ही नहीं करना चाहिए. पर अगर हमारा एक 7 है कि हमने सोचा कि 7 से मैंने शुरू नहीं करना है, तो एक मैंने वर्ड्स में लिख दिया और एक मैंने नंबर्स में लिख दिया, तो गलत हो गया. तो 7 and 13 आप दोनों एक ही तरीके से लिखिए, एक ऐसा एक वैसा नहीं लिखेंगे. And never, if you are beginning a sentence, never begin a sentence with a numeral. That is important. So, is this clear कि भाई हमें 1 to 9 वाले जो हैं वो उसमें नहीं लिखने हैं, वर्ड्स में नहीं लिखने हैं, तो हमने एक न्यूमरल एक वर्ड्स में लिख दिया और एक हमने न्यूमरल में लिख दिया. दैट विल ब्रेक द कंसिस्टेंसी. तो जैसे हमने राइट इन द बिगिनिंग देखा था कि कंसिस्टेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. देन जैसे मैंने कहा कि वर्ड्स अगर आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो ऑलवेज यू विल स्पेल आउट, ऑलवेज. But there is an exception. So 75,000 ink cartridges are sold every day. मैं इसको नंबर से नहीं शुरू कर सकती. I should spell it out. 19th century, I should spell it out. But if I'm talking exception is when I'm talking about a particular year. Then I can start with a number. That is important. Is this clear? Shall we just revise quickly what we have done in this? We numerals में हमने क्या किया? हमने कहा कि 1 to 9 should be spelled out, right? But उसके साथ exceptions हैं. और एक्सेप्शन ये है कि अगर 1 to 9
अगर उसके साथ specific unit of measurement आ रही है, then we can write a numeral. But if there is no specific unit of measurement, then we should write in words. And big numbers, 75,000 या 82,000 या 50,000 से अगर मेरा sentence शुरू हो रहा है, तो I cannot write a numeral. I will write in words 50,000 or 55,000. बट अगर मैं ईयर की बात कर रही हूं तो ईयर मैं हमेशा नंबर्स में लिखूंगी. Any questions? Ma'am, shall we take Okay. a break? Oh yes, let's take a break. Yes. Okay. We will take a 5. Hello, is there need of break or shall we continue? Hello, am I audible? Yes, ma'am. We take a break, please. Break 5 से? Please take a break. Yes. Okay. Yes, ma'am. ब्रेक लेते हैं. Okay. हाँ. यस सर, बोलिए. Hello, anybody has to say something? ते मग चालू राहतं. चालू असतानाच.